Chalo, let's start the show. Yes, so we got a chocolate with us at this point of time, and previously we'll take a quick recap. So first of all, we have learned that the cocoa is something that is made from the cocoa beans, and that's how the cocoa beans is actually look like. Followed by, we have learned that the cocoa comes from the Nahuatl Aztec civilization. They are the first people who have invented this concept of chocolate. It was widely available in the Amazon rainforest almost like 5,300 years back until Olmec people or Olmec civilization people from Mexico arrived accidentally at Amazon rainforest, and then they collect those saplings from there and started the plantation at the Mexico. But finally, at the time of the Aztec civilization, this chocolate flourished too much. And when the you can take a look at this thing that Hernan Cortes was the Spanish conquistador. He arrived on the coast of what is that called? Yeah, coast of Miami, that is in the USA right now. So he have found that this very important and also economical fruit, that is the cocoa fruit, and he brought this thing back to the Spain, and that's how the European countries know. And Francisco Pizarro also arrived at the coast of Peru. He found out actually gold, but he haven't found anything chocolate or something like this because he never been to the Amazon forest. Finally, from their hand, it came to the European countries, and after European countries, it is found all over the globe. Okay. Then in the 18th century, as we know that the Ivory Coast and Ghana produce one of the greatest qualities of chocolate. So how this chocolate reached to Ghana or Africa? Until unless Tete Kureshi, this is the person, and he was also a bonded labor in the Spanish conquistador team, and he brought those sapling to this country, and then there was a agricultural revolution at the Ghana and the Ivory Coast, and from there we get the chocolate all over the world. Today, maximum production is done by the Ghana and Ivory Coast, and then obviously Mexico. But Mexico don't bother for chocolate because there is very valuable thing also come from Mexico. Anybody in this group can tell what are the other things that come from Mexico? Apart from chocolate, a very, very famous thing that comes from Mexico. Anyone? Chalo, it's an alcoholic beverage. Now, nobody. Apart from chocolate, what Mexico manufacture? There is a very, very famous Bollywood song in the name of that alcoholic beverage. चलो ठीक है और hint देता हूं. That beverage, yes please. Anybody? What is it? चलो और एक hint देता हूं मैं. This beverage is served in a shot glass. अब तो कोई बोल सकता है. The tequila. Yes, that's right. Tequila. Who is that? Diaz, I think. Yes, Diaz. Right. Okay, that's good answer. It's tequila. Tequila comes from Mexico. One of the highest economical beverage from there. So that's why they really don't bother about the chocolate, because their economy runs with the help of tequila, because the entire world is served tequila only from Mexico only. Okay, right? So then we got the cocoa plant. Theobroma cacaoensis is the scientific name of the cocoa plants, followed by they have got 4 different variations: Forastero, Cirolo, and finally Trinitario. It names come like something like this. Trinitario is something come from the Trinidad and Tobago, somewhere in the West Indies. And this is how the cocoa plant fruits look like. Okay. First of all, you pluck the pods, you open that. This knife is very important, which is known as a machetes. ये देखिए machetes की तरह होता है, and that's how it is cut. And we also learned this trivia that 1 pound chocolate or 435 grams of chocolate अगर आपको manufacture करना है, तो you need 400 cocoa beans, not fruit, 400 cocoa beans. तो अगर आपके डेयरी मिल्क सिल्क अगर जब खाते हो तो वहां पे you will see that the quantity, how much is there, 500 grams or something like that. You can understand that how many chocolate beans are introduced in that. Then we do the fermentation. After this fermentation, it has been kept for the 5 to 8 days.
This is how the fermentation is done on the banana leaves, and finally the color change and the fermentation happens. For the Forastero and Trinitario, it takes 5 to 7 days. For Cirolo, it takes 3 days. There are the two type of yeast which has been used. One is Saccharomyces cerevisiae, and the Hanseospora thailandica is the another yeast which is used to make fermentation. Because without fermentation, without a bacteria or a yeast or any fungi, you cannot do the fermentation. Here's the objective: you get the heat, and in the heat, the aroma and cocoa develop. Then you do the drying like this. This is a picture of Ghana where the people dry the chocolate beans like this, cocoa beans like this. A week, and after this, your cocoa beans is ready for chocolate manufacture. So now we will pack this chocolates in this containers. I mean, like not container, it is like a bags, and then we send it to the chocolate manufacturer like Nestle, like Lind, like Cadbury, like you know, but there is something called dark chocolate brand that is known as a Ghirardelli, that's from the Italy. All these places we are sent, and they make their chocolates accordingly. So now we will come to the chocolate. So my beans are ready. It has come to the chocolate manufacturer factories. Now let's take a look what happened. The first thing that happened is roasting and winnowing. At the temperature of 100 to 140 degrees Celsius, the cocoa beans are roasted. Generally, when you roasted the thing, you will get a color and the flavors in the beans. And all those fermentation के कारण जो flavors था, those get all incorporated, and it will get a very fantastic smell. That is why when you eat chocolate, how can you understand? Suppose समझ लो रोहित बोस चॉकलेट खा रहा है किसी को ना बोल के, तो ये बात पूर्वी सेट को कैसे समझ में आएगा? Anybody? रोहित अभी चॉकलेट क्या है? हाँ, please tell me. Smell. Yes, smell. So what kind of smell you will get? Sir, roasted. Yeah. Cocoa beans. No, not cocoa beans. You get a you get a burning sweet smell. जला हुआ मीठा smell आपको एक आएगा. Yeah, that's right, something like this. So समझ लो रोहित बोस चॉकलेट लेके आया है और लेक्चर हॉल 22 लेक्चर हॉल 1 में बैठ के छुप छुप के खा रहा है. और जैसे ही पूर्वी सेट उसके सामने जाता है तो पूरी बोल रहा है चॉकलेट खा रहा है, मेरे को भी दे. बोल नहीं, मैं तो नहीं खा रहा हूँ चॉकलेट. बट यू विल स्टिल गेट द स्मेल. The smell is coming from this roasting because of the roasting only. Okay. Now we can take a look. This is very interesting thing will happen now. We'll take a look at a video also. So now the cocoa beans that you have, it has got an outer shell and inner shell. So once you roast, then the cocoa will divide into two parts. One is cocoa nibs and the other one is cocoa butter. So one is cocoa nibs and cocoa butter. Cocoa butter को हम हटा देंगे, हमें नहीं चाहिए. हमारा काम है cocoa nibs के साथ. तो कुछ देखने में कुछ ऐसा होता है. तो आपने इसको ऐसे रोस्ट किया. रोस्ट करने के बाद ये देखिए, ये बीन्स का जो ऊपर वाला हिस्सा है, that will get broken. ये जो व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है, ग्रीन कलर का जो आपको दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट अ बटर. ये है कोकोआ बटर और द फैट, एक्चुअली इट इज फैट नॉट अ बटर. एंड ये जो ये टूट के आ रहा है, दिस इज नोन एज अ कोकोआ निब्स. और ये जो कोकोआ निब्स है, दिस कोकोआ निब्स आर फाइनली यूज्ड टू मैन्युफैक्चर चॉकलेट विद द हेल्प ऑफ डेफिनेटली कोकोआ बटर. ओके, इसके बाद when the shells are broken like this, we will do a process called winnowing. Winnowing is a process where we will put this chocolate inside this machine and you get all the chocolate, cocoa nibs and cocoa butter got separated. Separation हो गया. अब हम next level में जाएंगे. ये जो cocoa nibs आपके पास आ गया, इसको अब ये ग्राइंडर, ये मशीन आपने देखा होगा. कहाँ पे देखा इस मशीन को? थोड़ा सा याद हो तो. एक ही टाइप की दुकान में इसको दिखता है. इट इज फाउंड बेसिकली इन द स्वीट शॉप्स. जितने सारे मिठाई के दुकान में अगर आप कभी जाओगे, मोरार में जाओगे या कहीं पे जाओगे, यू विल फाइंड दिस थिंग. तो यहाँ पे चॉकलेट कोई कोकोआ निप्स को यहाँ इसके अंदर डाल दिया था एंड देन द स्टार्ट द ग्राइंडिंग प्रोसेस. इन द ग्राइंडिंग प्रोसेस क्या होता है, व्हेन दिस टू रोलर्स पुट द प्रेशर
on the cocoa nibs, then it will create a heat. उस heat से it convert into a chocolate. So कोकोआ नीब्स धीरे 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 लिकर की तरह बन जाता है, मतलब एक लिक्विड की तरह बन जाता है. इसको हम कहते हैं अनस्वीटेंड चॉकलेट. अभी इस चॉकलेट के अंदर मिठास नहीं है, बट दिस चॉकलेट विल कंप्लीटली स्मेल और टेस्ट लाइक अ ब्लैक कॉफी. It will just taste like a black coffee because there is no single sweet inside it. Because आपने उसको रोस्ट किया है, रोस्ट करने के बाद आपने सीधा इसको ग्राइंडिंग में डाल दिया. So you will see there is an unsweetened chocolate without any sugar in it. कोई मिठास नहीं है. इसको हम कोकोआ मास भी कहते हैं. So people please understand, if somebody says what is unsweetened chocolate, please understand how do you get it. After the grinding, you get an unsweetened chocolate like a liqueur. Okay, and then cocoa liquor जो बच जाएगा आपके सामने, it is mixed with the cocoa butter and sugar to manufacture the chocolate. अब देखो, ये डिपेंड करता है उस मैन्युफैक्चरर के ऊपर whether they want to make. यहां से चॉकलेट की क्लासिफिकेशन शुरू हो जाती है. Whether they want to go for a white chocolate, whether they want to go for a dark chocolate, or whether they want to go for a milk chocolate. It actually segregated from here. तो अभी आपको समझ में आ गया होगा. आपके पास अनस्वीटेंड चॉकलेट है, उसको अगर मुझे डार्क चॉकलेट करना है तो ऑब्वियसली आई नीड टू पुट सम लेस शुगर इन दैट. व्हाइट चॉकलेट में वी विल डेफिनेटली ऐड शुगर, बट देयर इज अ लैक ऑफ मिल्क. सो यहां से चॉकलेट की क्लासिफिकेशन शुरू हो जाती है. हमारे मार्केट में, इंडिया में जो मैक्सिमम चॉकलेट आपको ये जो ग्रोसरी शॉप्स में दिखता है, ऑल दोस चॉकलेट आर आइदर अ व्हाइट चॉकलेट और अ मिल्क चॉकलेट. डार्क चॉकलेट इज फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स एक्सपेंसिव and it is not consumed in India widely like the other countries. Like if you go to Switzerland, if you go to Finland, Norway, European countries में सबसे ज्यादा इसको consume किया जाता है. It has got a less number of fat, less chances of diabetes. Dark chocolate पीने से diabetes भी कम हो सकती है. लेकिन white chocolate पीने से like this क्या नाम है इसका, Cadbury Dairy Milk or Cadbury Silk, if you drink it or if you eat it, definitely you get a diabetes. But dark chocolate, if you consume, you won't get a diabetes. But yes, you have to spend a lot. That's the problem. तो क्यों डार्क चॉकलेट खाने से हमारा डायबिटीज नहीं होगा और शुगर की प्रॉब्लम नहीं होगा, उसके पीछे एक कारण है. बट बिफोर दैट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज अ कोकोआ बटर. कोकोआ बटर क्या होता है? सो कोकोआ बटर बेसिकली, जब हमारा जो कोकोआ लिकर, चॉकलेट लिकर जब बन जाएगा, वी विल पुट अ हाई प्रेशर इन इट. And in that pressure, that is equals to 550 kg per centimeter square, वो press करने से what will happen? You will get a separate liquid. This liquid is known as a fat. Later, this liquid only solidifies into a butter. Okay? So this is the butter which is known as a cocoa butter. Or let me tell you, कोकोआ बटर चॉकलेट छोड़ के और किस चीज में आपको दिखाई देता है? एनीबडी कैन से? कॉफी, कोकोआ बीन्स. नहीं, समझ लो, चॉकलेट में तो कोकोआ बटर है ही. बिना चॉकलेट के और किस में दिखाई देगा आपको? आप लोग पीनट बटर. पीनट बटर में कोकोआ बटर नहीं होता. सोप. यस, दैट्स राइट. Soap, moisturizer like Lakme. Sorry? Sir, may you repeat the question, please? Yeah, the question is, चॉकलेट को छोड़ के और किस जगह में हमें कोकोआ बटर का सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस दिखता है नॉन ईटेबल प्रोडक्ट्स में? एक तो साबुन में दिखता है, दूसरा क्रीम्स, मॉइस्चराइजर. Yes, absolutely right. Cream, moisturizer, lotions like cocoa glow. Yes, let's take an example. Take a look at this. Vaseline cocoa butter. Yes. Or else if you go to Nivea is the only company that add too much of cocoa powder. Nivea का blue color का एक bottle आता है, जैसे कि कहा जाता है जिसका स्किन बहुत ड्राई है उनके लिए कोकोआ बटर का जो Nivea moisturizers होता है, those are the beautiful options. Okay.
So please, when you go to a supermarket and shop, please take a look at all this thing. How can a cocoa butter? So basically, when you use this Vaseline, why Vaseline is only used in the time of winter? The reason behind this only, winter में जैसे ग्वालियर में भी 5 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, your skin gets dry. So if you use the Vaseline, it will remain remain not dry for a long time. So that is the reason cocoa butter is added inside this. A very, very important knowledge. Yes, it will be there in the chocolate also, but cosmetics में सबसे ज़्यादा cocoa butter की use होता है. And this is how your cocoa butter finally look like. ऐसा होता है इसको देखने में. Okay. इस कोकोआ बटर को हम फूड प्रोसेसिंग में यूज कर सकते हैं. ओके, वी कैन समटाइम यूज इन द पीनट बटर. ओके, देयर आर लॉट्स ऑफ अदर थिंग वी कैन आल्सो यूज. ओके, तो व्हेन यू हैव अ टाइम, प्लीज इन मालनपुर इफ यू गो, देयर इज अ कैडबरी का चॉकलेट फैक्ट्री है. वो आप मालनपुर में जाओगे, मालनपुर इंडस्ट्रियल एरिया में, you will enter, when you enter the Malanpur, you will find that smell is coming to your nose. Okay, so that is the food processing industry where the chocolate is manufactured with the help of a cocoa butter, right? Sir, white chocolate is also made from cocoa butter, right? Yes, yes, yes. Without butter, chocolate cannot be made. But there is also a difference. Why white become white and dark become dark? We'll come to that. So this is the reason of a cocoa butter. Cocoa butter is widely used in the cosmetics and also chocolate and other food processing thing. Okay. Then also there is another trivia. Cocoa powder. Most of the people at their home, maybe if you go, there is a cocoa powder is also, someone know Wakefield. Wakefield is a very, very famous brand of cocoa powder. So how they do the cocoa powder? You have seen the cocoa nibs are separated. So cocoa nibs are there, which we later converted into a chocolate. These nibs are once again grinded. इसको वापस grind किया जाता है to make it into a powder. इस process का नाम है Broma process. Broma process is a system in which the cocoa powder, cocoa nibs are further grinded into a cocoa powder. Okay. तो जब हमारा nibs और fat separate हो गया, मुझे पता है कि nibs से chocolate तो बनने वाला है, लेकिन उससे पहले हम उससे कोकोआ पाउडर कुछ सम अमाउंट कर लेते हैं. जैसे हम लोग कैडबरी का खुद का कोकोआ पाउडर का भी है ब्रांड, and also they have a brand of chocolate, we all know. So while at the time of the manufacturing, this people, the manufacturer separate this two. कि 1 किलो मैं कोकोआ पाउडर के लिए रखता हूं and 10 kgs we will put it for chocolate manufacturing. Like if you go to the bakery, when you go to the bakery for any chocolate thing, chocolate pastry or chocolate thing you make, that is actually made from the cocoa powder. When you go to the Bhatt-Sar's class, you will find the same thing also. You will be using this cocoa powder sometime. And there is a natural cocoa powder. अब यहाँ पे भी एक interesting चीज है. Natural cocoa powder are those directly जब आप nips को roast करते हो, that you get a natural cocoa powder. But there is a problem of this cocoa powder is that you cannot eat or drink this cocoa. आप एक अगर स्पून आप मुंह पे लगाओगे तो you will feel like आप नेस्कैफे का पाउडर पी रहे हो, पाउडर खा रहे हो, इतना घटिया लगेगा आपको. तो उसको बंद करने के लिए there is also a process which is known as a Dutch process. Dutch process के बाद क्या होता है, वो कोकोआ कंज्यूमेबल लेवल में पहुंच जाता है. Dutch process क्या होता है? There is something called alkalizing. I am not a chemist, but I can understand there is a alkalizing agent. This agent are sodium, potassium, salt. If you add it, what will happen? The acidic level or the pH level, which is high in the cocoa, natural cocoa, it will slow down and it become milder. And those cocoas are actually used. Take a look at this. How a natural cocoa and a Dutch process cocoa look like. ये देखो. So naturally ये अपना कोकोआ निकल के आता है कोकोआ निप से डायरेक्टली ग्राइंडिंग के बाद. लेकिन उसको अगर आप ये सोडियम पोटेशियम से if you do and treatment, then you will finally get a this kind of cocoa. और यही कोकोआ मार्केट में मिलता है. But yes, there are some countries or there are some brand who sells the natural cocoa also. ये देखो आप एग्जांपल देख सकते हो. जैसे कि Hershey's is a very, very famous brand of cocoa. They make natural unsweetened cocoa. मतलब जो पहला वाला कोकोआ जो है, ये लेबल्स के अंदर लिखा हुआ. इसका मतलब ये कि पहले से वो लिख के दे रहा है कि if you drink this cocoa, you need to add a sugar because it is very, very bitter, just like a coffee powder. कॉफी पाउडर और कोकोआ में अनस्वीट एंड नेचुरल कोकोआ में कोई डिफरेंस नहीं है. बट देन देयर इज समथिंग called La Casa. It is an Italian company and it is
प्रीमियम डच प्रोसेस कोकोआ, दिस इज ऑन द स्लाइटली स्वीटर साइड, मतलब स्वीटर तो नहीं है बिकॉज द एसिड लेवल इज डाउन, देयर इज नो शुगर, एक्चुअली कोकोआ पाउडर में देयर इज नो शुगर, but the acidic level will be down and that is the reason you will feel comfortable to consume. Okay, चलो हम फाइनल स्टेज में आ चुके हैं। तो हमारे पास कोकोआ निब्स आ गया, हमारे पास अभी कोकोआ बटर और निब्स को हमने सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने के बाद हमने कोकोआ निब्स को ग्राइंड करके चॉकलेट लिक्विड बना दिया, लेकिन दिस लिक्विड इज नॉट ड्रिंकेबल। अब डेयरी मिल्क अगर मुझे बनानी है तो मुझे क्या करना होगा? तो कोकोआ लिकर और कोकोआ मस जो हमारे पास है, जो कंप्लीटली अनस्वीटेंड है, दैट इज एडेड विद अ कोकोआ बटर। जो कोकोआ बटर हमने सेपरेट किया था, उस बटर को हम वापस उसके अंदर ऐड कर देंगे एंड देन फाइनली यू गेट अ डिफरेंट काइंड ऑफ चॉकलेट और कोवर्चर। पीपल रिमेंबर दिस वर्ड, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंच वर्ड फॉर चॉकलेट। इसका नाम है कोवर्चर, COUVERTURE, a very very important MCQ question. People, please do not forget this one. What's the French name of chocolate? Couverture. And after that you will get something like this. So your chocolate is classified into three broad categories. One is a milk chocolate, one is a white chocolate, and one is a dark chocolate. So if you have a milk chocolate, take a look at this. Milk chocolate looks like this. It's not white. It is not white, but it is sweet and it has got a milk. अब देखो ये मिल्क चॉकलेट दिखने में, इसका रेसिपी क्या है? ये आपका व्हाइट चॉकलेट हो गया और ये आपका डार्क चॉकलेट हो गया। देखो डार्क और मिल्क में फर्क देखो, पूरा काला है ये, एंड ये नॉट कंप्लीटली ब्लैक बट स्लाइटली ऑन द रेडिश साइड, जस्ट लाइक जो ब्रिक्स का जो कलर होता है ना, ब्रिक्स का, दैट इज द कलर एक्चुअली। बट व्हाई दिस कलर चेंजेस? उसके लिए एक रेसिपी है, देखो दिस इज द रेसिपी ऑफ अ मिल्क चॉकलेट। तो हमारे जितने ये डेयरी मिल्क है, उसके बाद कैडबरी है, सिल्क है, 5 स्टार है, स्नीकर्स है, सबके अंदर इस टाइप के चॉकलेट जाता है। इसका रेसिपी है शुगर, मिल्क, कोकोआ पाउडर, कोकोआ लिकर, कोकोआ बटर, लेसिथिन एंड वैनिला। बट जब व्हाइट चॉकलेट आता है तो उसमें एक चेंजेस होता है। क्या चेंज होता है? There is a sugar, there is a milk, and there is also a milk powder. That's the thing which makes it much more whiter in color. Lecithin and vanilla is common thing are there. And lastly, if you take a look at the dark chocolate, देखो dark chocolate का क्या रेसिपी है? It is cocoa powder, cocoa liquor, cocoa butter, sugar, and lecithin vanilla. देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाई डार्क चॉकलेट आर रियली गुड फॉर हेल्थ, बिकॉज सॉरी देयर इज नो शुगर एक्चुअली, आई हैव मिस्टेकनली रिटन, डार्क चॉकलेट में शुगर नहीं होता है। ओके सॉरी, तो डार्क चॉकलेट में शुगर नहीं होता है। सो बेसिकली ये आपका रेसिपी है, कोकोआ पाउडर, कोकोआ लिकर, थोड़ा सा स्वीटनेस चाहिए मुझे, ठीक है, तो कोकोआ बटर तो है ही, एंड वैनिला। सो देयर इज नो मिल्क, देयर इज नो शुगर. That is the reason if you drink or if you eat dark chocolate, you will never have a sugar problem, you will never have a diabetes problem. But अगर आपने ये दोनों खाया जो हम रोज अपने डेली लाइफ में कंज्यूम करते हैं, व्हाइट चॉकलेट एंड डार्क चॉकलेट, ये तो पक्का है। मतलब 19 साल की उम्र में ही आप अगर कल से ही डेली 5 डेयरी मिल्क सिल्क खाना शुरू कर दिया ऑन अ डेली बेसिस, तो 6 महीने के अंदर तो शुगर आपका पक्का ही है, ठीक है। लेकिन डार्क चॉकलेट में दिस विल नॉट गोइंग टू हैपन, ओके, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल, या बट डार्क चॉकलेट हैज अ प्रॉब्लम व्हिच अदर डोंट हैव. I mean, all the chocolate have a problem that dark chocolate has got lots of fat. तो आप बहुत मोटा हो जाओगे, you will become very 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 fat. ठीक है? So that is the thing. But yes, fattiness is okay, but the sugar is very dangerous. So if you add more sugar to your bloodstream or your tissues and all, naturally it will convert into diabetes. इसलिए डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि do not eat the chocolate. वो इस कारण कहते हैं. If you eat a dark chocolate, there is no problem. But वही बात है कि one Lind बोल के एक स्विस ब्रांड है, उसका डार्क चॉकलेट का प्राइस है कितना? 200 रुपीज. अब डेयरी मिल्क सिल्क का या फिर 5 स्टार का प्राइस कितना है? 5 रुपए या 10 रुपए. तो नेचुरली इंडियन हैंड्स विल डेफिनेटली गो टू दैट
chocolate only. Okay, so ये आपके basic recipes है. Okay, तो milk white chocolate looks like a white, but the milk chocolate it named milk. तो naturally हम लोग ये सोच रहे थे कि okay milk है तो maybe it will be much more white in color. No, because इसके अंदर कोकोआ, इसके अंदर milk powder नहीं जा रहा है. Powder and milk both makes it much more whiter, and definitely when there is a white chocolate, the ratio of the milk powder and milk will be more than the milk chocolate. That is also the reason it turned into a white color. Okay, so this is the basic differences of three different kinds of chocolate. So now we can understand from a simple small bean how the chocolates comes. Okay, I will go back again to the previous slide to do a quick recap. So first of all, we do the manufacturing. In the manufacturing, we roast the chocolate, and once we roast the chocolate, we get a cocoa nib and cocoa butter. तो cocoa butter जो ये ऊपर आपको हिस्सा दिख रहा है, this is known as a cocoa butter. और ये काला काला जो है, this is known as a cocoa nibs. So once this thing are separated, then we do call the winnowing. Winnowing is a process जहां पे ये separation होता है. Cocoa butter gets separated, cocoa nibs get separated. हमें कोकोआ निप्स चाहिए बिकॉज कोकोआ निप्स से हम बनाएंगे चॉकलेट. तो इस कोकोआ निप्स को व्हाट वी विल डू, वी विल पुट इट इन अ ग्राइंडिंग मशीन जस्ट लाइक दिस. इट विल ग्राइंड इन अ हाई स्पीड एंड अ हीट एंड देन वी गेट अ कोकोआ लिकर, एक लिक्विड पैदा होगा. बट लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसके अंदर शुगर नहीं है, क्योंकि शुगर तो हमने फैट और शुगर जो हमने ऑलरेडी सेपरेट कर दिया है ना, वी हैव ऑलरेडी सेपरेटेड दैट and that is known as a cocoa butter. But now we will add it back again. यहां से differentiate होता है कि which chocolate will turn into a white chocolate, which chocolate will turn into a milk, and which will turn into a dark. That is upon the manufacturer choice और Nestle क्या सोचता है और Cadbury क्या सोचता है, maybe that doesn't matter. We learn about the cocoa butter. तो जो वो cocoa butter separate हो गया था, उसको हमने प्रेस करके इतना प्रेस करेंगे कि वो लिक्विड बन जाएगा at a pressure of 550 kg per square. And उस प्रेसिंग से we will solidify. Naturally इसको refined chilled करने के बाद molds में we'll get a solidified. So this is how the solidified cocoa butters look like, just like our Amul butter की तरह इसको देखने में होता है. But yes, cocoa butter की सबसे ज्यादा यूज जो है that is used in the cosmetics, moisturizer, okay, lotions and all. Winter के जितने सारे creams है उसके ऊपर सबसे ज्यादा इसकी होता है because it's dry. ठीक है, तो कभी पीपल अगर टाइम मिले तो आप अपने स्किन के ऊपर घर में समझ लो मॉइस्चराइजर नहीं है, अमूल बटर लो, उसको थोड़ा सा मेल्ट कर लो और स्किन के ऊपर लगा दो. ठीक है, मैं पकड़ नहीं पाऊंगा कि कौन शेविंग करके आया कौन शेविंग करके नहीं आया. ठीक है, इट्स अ ट्रिक. बट चलो, सिंस मैंने ऐसा ट्रिक खेला है तो आई नो दैट हु हैज पुट अ कोकोआ बटर और नॉट. ओके, and it will become very much smooth. Your skin become very smooth, nice. You looks like just Hrithik Roshan or maybe Priyanka Chopra, something like this. So that is the reason cocoa butter is highly used in the cosmetics rather than the food pricing actually. And this is how the cocoa powder look like. One is a natural cocoa powder that is completely unsweetened. This is how the natural and Dutch processed cocoa powder look like. Take a look at this. The first one is completely look like a coffee. ये अगर आपने गर्म पानी में डाल के पी लिया तो you will exactly feel that somebody has given you a black coffee. But if you take this Dutch process, the acidic level will reduce, and then what you get actually, it's a very, I won't say it's a sweetening chocolate cocoa powder, but yes, थोड़ा सा तो उसमें pH level तो down हो गई. Okay. Finally, we will come to the final stage. ये जब आप किसी सुपरमार्केट में जाओगे, please take a look at this levels and all. तो वहां से आपको समझ में आएगा कि what is a unsweetened chocolate and what is a sweetened chocolate. ये आपको समझ में आएगा. Okay, what is a Dutch processed chocolate and what is a natural chocolate. And lastly, chocolate are classified into three parts. You can take a look: milk, white, and dark. This is how it's look like. Okay, and here chocolate French name we have learned that's known as a couverture. So milk chocolate is something made from the recipe like this, where we got a sugar, milk and cocoa powder. This is our common chocolate which you easily find in any color. देखो आपको कलर में यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा होगा, ये थोड़ा ब्रिक्स की तरह होता है, लाल रंग.
But look at the dark chocolate. It's completely dark, bilkul pitch black, just like a coal. This is the difference between the milk and the white milk and the dark chocolate. Naturally, too much of cocoa, too much of milk and milk powder used. That's the reason it's look like a white. And usme jo hota hai dark chocolate ke andar, that is no sugar. We just, but still, if you eat a dark chocolate, you still find the sweetened flavor. So the sugar, we will not add in that. But cocoa butter hone ke karan, you will still get those sweet smell. लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग केस ये है, अब अगर रोहित बोस लेक्चर हॉल 1 में बैठ के डार्क चॉकलेट खा रहा है बिना पूर्वी सेट को बोलकर, तो पूर्वी सेट अब इसको पकड़ नहीं पाएगा, ओके, बिकॉज द स्वीटनेस इज नॉट देयर. तो पूर्वी सेट को ये लगेगा कि रोहित शायद ब्लैक कॉफी पी रहा होगा, तभी कुछ स्मेल नहीं आ रहा. लेकिन अगर इफ रोहित ईट्स कैडबरी डेयरी मिल्क सिल्क, then anybody can pick up that. Okay, right? So that is how it is. Now, lastly, we'll take a look at the brands. These are the famous chocolate brand. Take a look. Valrhona, French brand. Rodel from USA. Hershey, we all know. Different variations are there. Chocolate syrups and all. Okay. It's Guittard Rogue, a very, very famous dark chocolate brand from Italy. Then Dorset Holland from Netherlands. Wakefield, a very widely used in India. You can find cocoa powder, chocolate syrup and everything. Cadbury dairy milk, that's from the England. Lind, another one that is from Switzerland, and Ghirardelli, that's from the USA. So Lind is a famous manufacturer of your dark chocolate. At least फायदा ये कि Lind के dark chocolate थोड़ा सा less expensive होता है. But yes, if you want to go for this Guittard Rogue and all this thing, these are very expensive. Okay, right? Okay, so this is the way we will done with our